أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in our today's online lecture number 9 of Applied Physics course. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the verse of Holy Quran. In our previous session of lecture 8, we was discussed about the concept of density field lines of electric lines of forces as well as the magnetic lines of forces. Similarly, the concept of electric flux related to the concept of magnetic flux. So electric flux is denoted by delta of n and magnetic flux is denoted by delta of phi. And comparative analysis, we can found that the electric lines of forces of flux generated by a unit positive test charge by which the lines of forces is passing through from a particular patch of area, then these lines of forces would be transformed into the electric flux. So this is the concept of electric lines of forces. Area passing through that particular lines of forces become the electric flux. So this concept is the relevant to electric field with electric flux. Formula we already discussed in our previous session. Now, the same scenario also exists that if the magnetic lines of forces, which is comes from magnetic poles, either they are the north pole or either they are the south pole. The magnetic lines of forces are starting or originate from the pole of north. And if these magnetic lines of field passing through any particular area, then it would be transformed to delta phi, which means we can say it's a magnetic flux. तो अगर मैग्नेटिक पोल से मैग्नेटिक लाइंस फ्लो कर रही हैं और वो किसी पर्टिकुलर एरिया में से पास हो जाती हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया है. इसका फॉर्मूला हमने इस तरह पढ़ा था कि डेल्टा फाई इक्वल टू बी इंटू डेल्टा ए. ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड कहलाता है. एंड द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नोटेड बाय कैपिटल बी. Furthermore, we are discussing the concept of magnetic flux density. So magnetic flux lines are continuous and close. Direction is that of the B vector at any point. Flux lines are not in direction of force but perpendicular. Perpendicular in the sense, uh, the passing through area of the lines of forces and the direction of area is perpendicular to either with the placement of its uh, on ground. So the angle is between 90 degree. That's a reason we can say the flux line are not in direction of force but they are perpendicular. Perpendicular in sense के जो magnetic lines of forces होंगी वो गुजर रही होंगी अपने जीरो एंगल के ऊपर और जो एरिया ऑफ पैच रखा होगा वो अपने 90 डिग्री पे रखा हुआ होगा. तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल परपेंडिकुलर की वजह से 90 डिग्री कहलाएगा. ये उसकी बात हो रही है. Same, the figure is same. So where area is the perpendicular to the flux and create the angle 90 degree. Now, this formula would be B equal to phi upon A and would be phi equal to B into A. So this formula can be represented in this way. The unit of flux, that is phi, having the flux density is Weber per square meter. So unit of flux density, that means the B having unit Weber per square meter. And the unit of flux is Weber. Weber is named by a scientist. उसके वेबर के नाम से ही मंसूब है फ्लक्स का जो यूनिट है, तो वेबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो बी है उसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है, जबकि
फ्लक्स का यूनिट है वो वेबर है। आफ्टरवर्ड्स, नाउ कैलकुलेटिंग द फ्लक्स डेंसिटी, यानी बी मालूम करना है व्हेन एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर। सो वी फाइनलाइज दैट if the area is perpendicular, then it would be looks like phi equal to b into a. But if the area is not perpendicular, then what will be the formula that the variation of angle could be fulfilled in this scenario? The flux penetrating the area A when the normal vector n makes an angle of theta with the B field. So magnetic flux density with the field, it would be represented in this way. If the lines of forces of magnetic field from north to south or flow from starting to ending primary to secondary destination, and the area which is going through from this side, it would be placed in this way, not 90°, it would be 60° or minus 60°, then angle is not particularly defined. So the formula would be phi equal to b into a cos phi or cos theta. Angle theta is the complement of the angle a that the plane of area makes with the b field. Cos theta equal to sine alpha can be say that because the anti-parallel lines can be make the consequent lines angles and would be set in this way. Origin of magnetic field. Magnetic field पैदा होती कैसे है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे. Recall that the strength of an electric field E was defined as the electric force per unit charge. इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा था, देखा था कि अगर एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी रीजन में रखा हुआ हो तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड्स नमूदार होने लग जाती हैं, पैदा होने लग जाती हैं, फ्लो होने लग जाती हैं. ये कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज से ओरिजिनेट करता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को. सिंस नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक pole has even been found, we can't define the magnetic field B in terms of the magnetic force per unit नॉर्थ पोल. जबकि मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इस तरह मैग्नेटिक पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और ये स्टार्ट होती हैं नॉर्थ पोल से और एंड आके कलेक्ट होती हैं साउथ पोल पे. इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में आके एब्जॉर्ब होती हैं. तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमने इसमें देखा है. We will see the instant that the magnetic field result from the changes in motion, not from stationary charge or poles. This fact will be covered later. तो ये बात मजीद जो डिटेल में है वो आगे आएगी. अब इसमें ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ हो तो लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से प्रोड्यूस होंगी और डॉट रोटेशन के मुताबिक यहाँ से प्रोड्यूस हो रही होंगी. और अगर इसमें पोटेंशियल और उसकी बात हो रही हो तो फिर इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे. फर्दर मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज. अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली है कि अगर एक चार्ज स्टेशनरी पोजीशन पर रखा हुआ होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं. इफ द चार्ज और यूनिट पॉजिटिव or test charge is placed in a region, then the electric lines of forces could be produced from it. But what happened if this charge is not stationary? एक जगह पे नहीं रखा हुआ बल्कि ये मूव कर रहा हो, तो then what will be the concept of what will be the concept, what will be the scenario? So we are now talking in this phenomena. Magnetic force on moving charge. Imagine a tube that projects charge plus q with velocity v into perpendicular b field. Experiment shows in this way that the two poles of north and south place near to each other and particularly a charges flow from this direction. So charges moving from this direction. So if the charge is moving in between these two poles, this charge would be feel the force. That particular force, upward magnetic force F on charge moving in field B. तो अगर एक चार्ज जो कि ये बताया गया है ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, यानी इन दोनों पोल्स के दरमियान से ये मूव कर रहा हो, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की फोर्स इंप्लीमेंट हो रही होगी
उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बनता है एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी। एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू क्या है? वो चार्ज जो इसमें से फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। v जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और b मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो कि नॉर्थ से साउथ के दरमियान फ्लो कर रही होंगी, और वो फोर्स जो फ्लो करने के दरमियान ये चार्ज मजाहमत की फोर्स महसूस कर रहा होगा अपने ऊपर, उस फोर्स को f से रिप्रेजेंट किया जाता है। Each of the following result in greater magnetic field force, an increase in velocity v, an increase in the charge q, and a large number of magnetic field which is uh, charges flow in between these fields. So the particular force of magnetic impact can be bear by that charge, that is the q, velocity by which it flow, move, and the b is in between the lines from which the magnetic in from which the charge is flowed. So that particular force we are talking about, that feels by the charge, force experienced by the charge, the formula is represented in this aspect. Hopefully the concept which I tell you guys up till now, you understand very well. But if have any kind of question, query or difficulty, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. So we further moving towards the next concept of direction of magnetic force. But how can we find the direction of magnetic force? The basic and main concept which Hens, Christian, Oersted provide to us, that we called a right hand rule. सीधे हाथ का कानून जो है वो ओरिस्टेड ने हमें प्रोवाइड किया था। बेसिक प्राइमरी क्लासेस में भी ये पढ़ाया जाता है। With a flat right hand, point thumb in direction of velocity v, fingers in direction capital B field, the flat hand pushes in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो राइट हैंड रूल है, अगर हम उसके हाथ को देखें, राइट हैंड रूल को देखें, तो उसमें हमारे जो थंब की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। राइट हैंड रूल में थंब की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी यहाँ पे, एंड जो फिंगर की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। और जो हाथ हमारा पुश कर रहा होगा इसे आगे, तो वो फोर्स होगी जो कि चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द पर्टिकुलर फोर्स। तो ये उस चीज का कॉन्सेप्ट है। द फोर्स इज greatest when the velocity is perpendicular to the field b and the deflection decreases to zero for parallel motion. So this concept we going to understand by this way. सो राइट हैंड रूल जो है वो हमें एक चीज और भी बताता है कि अगर आपने चार्जेस का फ्लो और उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो देखना है, तो जो चार्ज का फ्लो होता है वो थंब की डायरेक्शन में आता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो फिंगर की डायरेक्शन में आता है। तो राइट हैंड रूल हमें ये भी बताता है जो हेंस, क्रिस्टेंट, ओरेस्टेड ने हमें प्रोवाइड किया था रूल। अब इसके बाद उन एंगल्स के ऊपर बात कर लेंगे जो फोर्स के तौर पे एक्सपीरियंस कर रही होती है वो चार्ज। फोर्स एंड एंगल ऑफ पाथ। डिफ्लेक्शन फोर्स ग्रेटेस्ट व्हेन पाथ परपेंडिकुलर टू फील्ड, लीस्ट एट पैरेलल। F, that is proportional to V into sine theta, so it would be form in a particular direction. तो अगर आप इसमें थंब की डायरेक्शन, वी की डायरेक्शन, फिंगर की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन और हैंड की डायरेक्शन आपकी एफ ऑफ फोर्स की होगी,
तो इसमें जो साइन थीटा होगा अपना रोल प्ले कर रहा होगा कि आप एंगल किस तरह सेट करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में आपको यहाँ से हासिल होंगी फोर्स, जिसके नतीजे में बनने वाला एंगल होगा। तो वो ग्रेटेस्ट फोर्स आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे व्हेन द परपेंडिकुलर टू फील्ड लीस्ट एट पैरेलल, जब वो उसके पैरेलल होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि साइन थीटा हमेशा अपनी पॉजिटिविटी दिखाता है एंगल बढ़ने के नतीजे में, यानी साइन की वैल्यू बढ़ेगी अगर एंगल बढ़ेगा, और साइन की वैल्यू कम होगी, एंगल कम होगा तो साइन की वैल्यू भी कम होगी। जिस तरह से हम जानते हैं कि साइन 0 0 होता है और साइन 91 होता है, तो एंगल की वैल्यू जितनी छोटी होगी साइन की वैल्यू उतनी छोटी होगी, और एंगल की वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो उसके हिसाब से साइन की वैल्यू भी उतनी बड़ी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोपोर्शनैलिटी का हम थीटा विद साइन जानते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड, definition of B field. Experimental observation show the following that F proportional to QVB sin theta। और अगर हम इसको अरेंज कर लें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, तो F यहाँ आ जाएगा और ये बाकी चीजें इसके नीचे आ जाएंगी, जबकि ये कांस्टेंट के तौर पे वहां पे रखा जाएगा। By choosing appropriate unit for the constant of proportionality, we can now define the B field, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है, उसको मालूम कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बी को कहते हैं। बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय, यानी इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमने बी रख दी, बी कांस्टेंट हो जाएगी। तो फॉर्मूला एट द एंड बन जाता है एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है? कि फॉर्मूला उस फिनोमेना का है कि जब इफ अ पर्टिकुलर चार्ज इज प्लेस इन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, then the force experienced by that particular charge is represented by F is equal to QVB sin theta। तो वो फोर्स जो कि वो एग्जर्ट हो रहा होता है, फील कर पा रहा होता है, ऑब्जर्व कर पा रहा होता है, ये वो फोर्स जो कि चार्ज महसूस कर पा रहा है। खुद वो चार्ज क्यू है, जिस वेलोसिटी से वो इन लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ पोल के दरमियान मैग्नेटिज्म में रखा हुआ है, जिससे वो मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी बी है। बी इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो कि नॉर्थ टू साउथ पोल के दरमियान से गुजर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक जगह से पानी आ रहा हो और एक जगह से जा रहा हो और आप दरमियान से गुजर रहे हो, तो आप उस पानी के बहाव को महसूस कर सकते हैं अगर वहां अपना कदम रखें। अगर उसका प्रेशर ज्यादा होगा तो आप उसके फिनोमेना को ज्यादा अच्छी तरह से फील कर सकेंगे। तो यही चीज है जो कि चार्ज जब एक अ, बहाव मैग्नेटिक फील्ड का रखा हुआ होता है तो वो किस तरह से फील करता है, ये उस कॉन्सेप्ट का नाम है। So after a short break, we are discussing about the concept of force which charge experienced by,
which charge experience in magnetic poles. A magnetic field intensity of 1 Tesla exhibits in a region of space where a charge of 1 coulomb moving at 1 meter per second perpendicular to the B field will experience a force of 1 Newton. That particular definition is the definition of capital B, that is the magnetic field intensity. Another name of magnetic field intensity is magnetic flux density. So these are the two names of B and the particular definition. So further, we are discussing the force on negative charge. If a charge, we are discussing the concept of unit positive test charge, but if charge is not positive, charge is in negative direction. So forces on negative charges are opposite to those on positive charges. The force on negative charge requires a लेफ्ट हैंड रूल. तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने और निकालने के लिए हमें नेगेटिव टेस्ट चार्ज के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत पड़ेगी बजाय राइट हैंड रूल के, टू शो डाउनवर्ड फोर्स. सो कॉन्सेप्ट सारा वही है, बस आपकी थंब की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, फिंगर की डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, और जो फेस ऑफ हैंड है या मूविंग ऑफ हैंड वो आपकी force की direction होगी. So this is the right hand rule. But if the concept from this way the positive and this way is negative direction of sign. So as per the left hand rule, for negative charge of Q which is flow from in between the charges, it would be represented in this way. Okay, so in left hand rule for negative charge Q, that is flow in between the magnetic lines of forces, you can see in this figure 2, the direction of phase of your hand is in downward direction. Finger direction is your magnetic field intensity direction, and the thumb direction is the direction of velocity. So figure 2 tells to us this concept. So these are some of the concept which we discuss in magnetic field of properties, left hand rule and other kind of things. So we are ending the concept of we are ending today's session, that is the lecture number 9 of flat physics. So hope you understand these kind of concepts, and if you have any kind of question or query or difficulty, feel free to ask. I will answer the kind of concept and discuss your queries if you have in your mind. So if you have no kind of query, then we end today's session. सबको खास